हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जाइगोट। नाउ जाइगोट चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो। देयर आर डिफरेंट इवेंट व्हेन जाइगोट चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के हम फर्स्ट 2 स्टेप्स पढ़ेंगे, दैट इज क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन। सो सी, दिस इज जाइगोट, diploid zygote with this cytoplasm and the plasma membrane, and this is zona pellucida जो ओवम की वॉल थी, अभी भी जाइगोट पे है। दिस इज जाइगोट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स क्लीवेज स्टार्ट्स। नाउ व्हाट इज क्लीवेज? The size of the zygote remains same. This is zona pellucida, and now the nucleus here divides and form mitotically. It divides and form 2 cell stage. These 2 cells are called blastomeres, and this is zona pellucida. Okay, now from 2 cell stage it forms, this is zona pellucida, 4 blastomeres, 4 cell stage, and then size of this during cleavage, the size remains same. This is similar to the size of the zygote. And now 8 cell stage. This is 8 cell stage. When this embryo reaches 8 cell stage, it is called morula. From 8 to 16 and then 32 cell stage. 32 cell stage तक ये क्या कहलाएगा हमारा? It is morula. This is 32 cell morula. From 8 cell to 16 and then 32 cell, it is morula, and these are blastomeres inside it. The size of a cell is similar to the approximately equal to the size of the zygote. Only the division occur and blastomeres are formed inside it, but no increase in size. And zona pellucida is there. zona pellucida का यहाँ रोल क्या है? zona pellucida इस एम्ब्रियो को either the wall of fallopian tube या फिर यूट्राइन वॉल के साथ अटैच नहीं होने देगी। और ये कहाँ बना था हमारा जाइगोट? एम्पुला इस्थमस जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब्स। अभी धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहा है? डिवीजन के साथ साथ, क्लीवेज के साथ साथ ये कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द यूट्रस। और अब एट दिस 32 सेल स्टेज ये कहाँ पहुँच चुका है? यूट्रस में पहुँच चुका है। और यूट्रस लाइनिंग के पास पहुँच के इट डिफ्रेंशिएट इनटू ब्लास्टुला। नाउ दिस मोरुला चेंज इनटू ब्लास्टुला, इट इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। क्या कहेंगे हम उसे? ब्लास्टुलेशन। सी हियर, नाउ the blastomeres inside the morula rearrange themselves, अपने आप को rearrange करेंगे, and they form the outer cells. Outer layer of cell is formed here. This layer is called tropoblast. This is tropoblast cells. और जो अंदर यहाँ पे ये cells हैं, ये एक साइड पे कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अ मास ऑफ सेल इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास, एंड दिस इनर सेल मास हैज आर cells of the inner cell mass are stem cells, and they are called stem cells and pluripotent cells. Pluripotent cell means ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंगल सेल कैन फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं हमारे, और ये सब एक साइड पे इकट्ठे होंगे। जिस साइड ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये द पोल, दिस पोल इज नोन एज एनिमल पोल। द साइड जिस साइड पे ये एक साथ एक्यूमुलेट हुए हैं दैट इज कॉल्ड एनिमल
पोल, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये क्या है, अभी भी यहाँ जोना पैलासुडा प्रेजेंट है, धीरे धीरे डिजेनरेट होनी स्टार्ट होगी वो, इट डिजेनरेट जस्ट बिफोर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से पहले डिजेनरेट होगी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, और दिस कैविटी में अब क्या फिल हो जाएगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा, एंड दैट फ्लूइड कहाँ से आएगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग से एब्जॉर्ब होगा, दैट्स वाई दिस ब्लास्टोसील इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड यूट्राइन मिल्क, एंड दिस ब्लास्टुला इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. किस चीज़ के लिए रेडी है, नेक्स्ट टर्म इज इम्प्लांटेशन. व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हेन embryo get attached and then embedded, firstly attached and then embedded itself into the wall of uterus, that is endometrium wall में अपने आप को embed कर रहा है, and leads to pregnancy. Means the first sign of the pregnancy is implantation, and sometime during implantation some bleeding occur known as implantation bleeding, or some pain also occur because here the endometrium stretch when implantation occur. So when this blastula, this is blastocyst, we can say this is blastocyst or blastula. In humans it is called blastula, otherwise it is referred as blastocyst. अब ये जो blastula है, it is ready for the implantation. Implantation means it get firstly attached and then embedded to the endometrium wall of uterus. So जैसे ही ये अपने आप को रेडी करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, then this zona pellucida degenerate, ये ख़त्म हो जाएगी, because this zona pellucida ही जो थी जो उसको ब्लास्टुला या मोरुला को यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं होने दे, तो zona pellucida ख़त्म, and now the implantation occurs. So see how the implantation occur. This is the wall of uterus, endometrium wall. In endometrium wall, implantation is a joint effort of a blastula as well as uterus. So first here this cavity is formed. Here cavity is formed so that blastula get attached. Now here this blastula releases lytic enzymes so that a cavity is formed and it can easily embed itself. This is tropoblast. And this is inner cell mass, and this inner cell mass is arranged in the form of knob, that's why also known as embryonic knob. From the embryonic knob side, this blastula comes in a contact with the endometrium wall by forming a cavity in the endometrium, and then these tropoblast cells form villi, finger-like projection, and these villi slowly penetrate inside the endometrium, and they move inside the endometrium until they come in contact with maternal blood to get न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन लेने के लिए एंडोमेट्रियम से मैटरनल ब्लड से जब तक उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये विलाई माइक्रो कोरियोनिक विलाई इंक्रीज होते जाएंगे, एंड दे फॉर्म कोरियोनिक. ट्रोपोब्लास्ट से क्या बने, कोरियोनिक विलाई, एंड विद द हेल्प ऑफ कोरियोनिक विलाई इट गेट एम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियम. अब ये एंडोमेट्रियम वॉल है, एंड here this is embryo with tropoblast, and outer cell of tropoblast has these chorionic villi for the formed during the implantation, and this is embryonic knob. Now this is completion of implantation that leads to pregnancy. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि during the first stage of the embryonic development, this is during the first week
आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में? क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, दैट इज ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एंड ऑन द 7th day of after fertilization implantation occurs that leads to pregnancy, or we can say confirmation of pregnancy. So this is a zygote and start doing cleavage after 24 hours. 24 hours के बाद उसने cleavage start की, उसमें पहले 2 cell stage blastomeres बने, then 4, then 8, and from 8 cell stage it is called morula, 16 cell stage morula, 32 cell stage morula, and this morula now reaches the uterine wall. ये near the uterus from the fallopian tube. ये अब कहाँ पहुँच चुका है? Uterus में. And now it differentiate into the blastula, and then this process is called blastulation. And during blastula formation सबसे पहले क्या होगा? The cells get arranged in an outer layer known as trophoblast, and rest of the cells get attached to the one side of the trophoblast known as inner cell mass. Now, and the cells that are in direct contact, cells of trophoblast that are in direct contact with the inner cell mass are known as Robert cells by the name of scientist. And the cavity appears. This cavity is called blastocele, or filled with the fluid obtained from the uterus. That's why it is called uterine milk. अब uterus cavity is fluid filled, cavity fluid filled हो जाएगी तो धीरे धीरे blastula का size increase होता जाएगा. And now the zona pellucida degenerate. zona pellucida खत्म हो जाएगी तो ये blastula किस ready है for implantation. Implantation means when it get attached to the wall of uterus. और implantation जो है it is a joint event of endometrium as well as blastula so that they can form connection. So here the cavity is formed and the blastula get attached from the animal pole side by forming a coronic villi. ये coronic villi किस में बने? ट्रोपोब्लास्ट में बने, और वहाँ से ये धीरे धीरे एम्बेड हो गया. नाउ दिस इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ने अपने आप को वापस से रिपेयर कर लिया है जहाँ से वो ब्रेक हुई थी, सो दैट ब्लास्टुला एंटर करे. वो रिपेयर हो चुकी है वापस. इट इज थिक एंड दिस इज नाउ blastula, and this blastula has embryonic knob, coronic villi all over it, and this is blastocele. Now this is up to the 7th day, that is at the end of the first week. Now in second week gastrulation occur. What is gastrulation? The formation of gastrula from the blastula. In next class we will learn about gastrulation.